Hello student, how are you? Hope all well. Now this is my second lecture, I hope, for the second unit. So we will start with the water, energy and water conservation. Earlier we have discussed in Eco Hotel, that is a 5 globe of certification, Eco Hotel certification. Generally the base of every eco hotels or eco sustainability is reuse three R's of eco hotels, that is a reuse, recycle and reduce, reuse and recycle. तो generally जितनी भी चीज़ें that is based on three, that is reduce, recycle and reuse. So here we will discuss the most important thing of the nature, which the nature given us, that is the energy and the water. So why we need to conserve our water, or what is conservation? What is conservation? To careful use of resources like energy and water to prevent them for being lost or wasted in future. You all know what is sustainability. Sustainability क्या होती है, ये सबको पता है कि the resources what we are using are scarce in nature, and to the careful use of that resources for the next future use, for the future generation, that is a conservation, and the ecotels, for the ecotels, that is a conservation and the sustainable thing. Now every sustainable development, for the sustainable development or for the conservation, the three thing is most important. Earlier in the ecotels, when we are discussing about the ecotels, we discuss about the, for every sustainable development and conservation is based on reduce, reuse and recycle. इससे क्या होता है कि जैसे आप बोलते हो रिड्यूस करें, रिड्यूस व्हाट, अगर मान लीजिए वाटर है या एनर्जी है, तो रिड्यूस का मतलब जितनी ज़रूरत हो उतने ही को जलाया जाए, पानी इस्तेमाल किया जाए, बिजली जलाई जाए. रीयूज़ का मतलब हम जैसे वाटर को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, किस फॉर्म में उसका दोबारा यूज़ कर सकते हैं, एंड द रिसाइकिल कैसे, और जैसे किसी पानी को या बिजली को या उसके सोर्सेस को हम कैसे रिसाइकिल कर सकते. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन इज जनरली बेस्ड ऑन रिड्यूस, recycle and reuse. Now the first topic is based on the energy conservation. Energy is the form of electricity and fuels are a substantial part of hotel operating cost and commonly add to 70% of utility cost. I hope you all know what is operating cost. The day-to-day usable thing what we bring for the hotel, what we purchase for the hotel, that cost, for example, operating cost may be the wages, the salaries, the electricity bill, the water bill, they are all operating cost. The major of this usually is air conditioning in guest room. Energy conservation is a quick way to reduce operating cost with little capital investment. एक्चुअल में आजकल क्या हो रहा है ना कि जैसे थोड़ा सा हम कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगा दे या ऐसी चीज़ें लगा दें अपनी इलेक्ट्रिसिटी, जो जिससे कि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसी चीज़ें हम अपने होटल में फिट कर दें जिससे कि एनर्जी यूज़ करने की कैपेसिटी कम हो जाए. फॉर एग्जांपल, जैसे होटल में सबसे ज़्यादा एनर्जी
यूटिलिटी कहाँ होती है, दैट इज अ एयर कंडीशनिंग. तो एयर कंडीशनिंग में हम कुछ जैसे थर्मोस्टेट लगा दे या टेम्परेचर मेंटेन करके रख लीजिए. फॉर एग्जांपल, if generally the AC temperature what should be made in a in hotel is 25 degree. तो हम ऐसा करें कि जैसे टेम्परेचर 25 डिग्री हो, कुछ थर्मोस्टेट या इस तरह, दैट इज अ कैपिटल investment. It can also reduce the harmful effect of fossil fuel on air quality, the ozone layer, global warming and sea level. Energy is supplied in the form of light, solar rays and chemical fuel like oils. एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? देखो, एक तो वाटर से मिलती है, सोलर रेज होते हैं उनसे मिलती है, और केमिकल फ्यूल से. होटल इंडस्ट्री कंज्यूम एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म. होटल पे इट्स एनर्जी बिल in lakhs per month. Energy conservation method help the hotel to save cost. Now in the globe we have discussed in the 5 globes of energy hotel certification. There is a role of education, whom we will educate the staff and the guest also about the energy conservation. Hotel staff should be aware of the concern regarding the consumption of air. Energy conservation guidelines should be thoroughly to the hotel staff. Guideline on does and don't should be clearly mentioned. Supervision. Now the tips for energy conservation. Use a natural light. First is use a natural light. When we will in a eco test, the direction of hotel, the maximum use of natural light, that is a sunlight. So इसके लिए क्या होना चाहिए? Well lit windows काफी होना चाहिए, जिससे कि हम ज़्यादा कोशिश करें. We will try our best to use most of the time the natural light, that is a sunlight. Now the artificial light. Lighting system with advanced control install chandeliers or decorative fixture only in public area as it consumes more energy. अगर आपको सैंडेलियर्स लगाने या बड़े बड़े टाइप के बल्ब्स लगाने, तो यूज ओनली दैट एरिया वेयर यू नीड अ एस्थेटिक अपील. आपको जहाँ लगता है कि जहाँ का ब्यूटिफिकेशन ज़्यादा होना है, वहीं पे आप इस चीज़ों का यूज़ कीजिए, और आपको ज़्यादा कहीं ना. द यूज़ ऑफ कंजर्विंग एनर्जी कंजर्विंग बल्ब लाइक CFL, LED, HMV, HPMV, the lamp, high power mercury vapor lamp, and the use of high pressure of sodium for the street light. They consumes, but nowadays the most effective to conserve energy through bulbs or lighting elements, that is a LED. Generally LED are now using mostly in the street area, in the home, or in the hotels and many other establishments where the LED and CFL are mostly used. जो CFL है और LED ये ज़्यादा यूज होती है. Use energy sufficient heating cooling system with thermal efficient building. Use minimum glass area on the east and west exposure, because ईस्ट और वेस्ट में क्या होता है कि मिनिमम ग्लास एरिया. ग्लास से क्या होता है कि वो एक एनर्जी मिल नहीं पाती है. यूज ड्रेबरीज एंड सन फिल्म ऑन विंडो टू कट डाउन ऑन एयर कंडीशनिंग कॉस्ट. आप अपने होटल्स में अगर इफ यू आर यूजिंग अ ग्लास, देन यू हैव टू मेक योर हैवी कर्टन, सियर कर्टन, द फिल्म आर देयर फॉर द ग्लास. आप फिल्म लगा सकते हैं जिससे कि जो एयर कंडीशनिंग में एनर्जी मिल रही है या जिससे कूलिंग हो रही है वो बहुत जल्दी बाहर की तरफ ट्रांसफर ना हो. यूज हीट reclaiming equipment in air conditioning plant. Heat from them can be used for heating water.
आप ऐसा कोई इक्विपमेंट लगा दीजिए जिससे रिक्लेमिंग इक्विपमेंट होता है जो एयर कंडीशनर से हीट निकलती है, वो आप उसको कंजर्व कर सके और उसको हम प्रोसेस में ला सके, जैसे किसी भी गर्म करने के लिए चीज़ों के हीटिंग, लाइक हीटिंग वाटर. कीप इक्विपमेंट क्लीन फॉर हाईएस्ट एनर्जी एफिशिएंसी. Minimize electric load for appliances and equipment. Sensor can turn off light and fan in unoccupied room. Now the alternative resources. Alternative sources may be the sun, biogas plant, solar energy, wind energy. They are the alternative resource. Install biogas plants for staff meal. Use solar powered vehicle to ferry guests. Consider energy like photovoltaic cell energy conservation checklist for guest room. Turn off light when not occupied. Use minimum lighting when servicing guest room. Turn off corridor light when natural light is available. Clean lamp shades for better light efficiency. Keep window closed and curtain on. So these are some tips for the energy conservation, and many more things would be included in this PPT. That is how to use of another sources of, like nowadays आपने देखा होगा कि काफ़ी सोलर एनर्जी का यूज़ होने लगा है. आपने देखा होगा कि जितने भी जो जनरेटर लग रहे हैं फॉर कंपनीज लाइक जियो, वो क्या करते हैं कि फॉर रिचार्ज दैट जनरेटर दे आर यूजिंग अ सोलर एनर्जी. बहुत घरों में भी सरकार ने, गवर्नमेंट हैज़ गिवन द अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल टू make energy from themselves, like using बड़े बड़े जो सोलर पैनल होते हैं. उससे एक्चुअली भी क्या होता है ना, जो आजकल सरकार गवर्नमेंट ने लोगों को दिया है कि बड़े बड़े पैनल आप लगा लीजिए. उसके बाद आप उस पैनल को आप तो एनर्जी ले ही सकेंगे, और जितनी एनर्जी बच जाती है यू कैन ट्रांसफ़र इट टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. ऐसा भी कुछ इंतज़ाम सरकार ने किया. तो सो दीज आर द सम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी. बायोगैस can also be used as the energy power, and some of the जैसे windmill है in the open area wind can also produces the energy. Now the water management system, water conservation. हम लोग अपने चाइल्डहुड से ये पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ में जितना भी वाटर है उसका 2/3 या 1/3 ही हम यूज़ कर सकते हैं. बाकी दे आर जो वाटर है वो सी वाटर है, और अप्रोक्सीमेटली only 1% as fresh water in river, lakes, the atmosphere. In groundwater account for 10% of utility bills. Water efficiency. Establish a water management plan. Now in every hotel they are using a water management plan. Like the first steps to start measuring water consumption and set some tangible target. Like आजकल हम लोग मीटर का यूज़ करने लगे, वाटर मीटर्स का. पहले भी काफ़ी यूज़ होता था, पर आजकल जितने भी होटल्स हैं उसमें वाटर मीटर लगा देते हैं, और इससे पता चलता है कि हाउ मच वाटर वी आर यूजिंग डेली पर डे for the controlling of water, for the conserving of water. Installing meter and taking regular reading will aid this, and sub meter will help you to see where the areas of greatest use, जहाँ हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं पानी का. Now the carry out a water audit to show where the major water costs are and where the saving can be made. देखिए होटल में वाटर का काफ़ी यूज़ है. यू ऑल नो because you have done your 6-month training in hotel.
so you know where the water should be, where the water are using mostly, like in air conditioning, like laundry, like guest rooms, kitchens, they are using water. So we have to, for conserving that water, we have to establish some measuring tools. हम लोग को कोई मेजरिंग टूल्स इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे कि वाटर को हम लिमिट कर सके और वाटर को कंजर्व कर सके. Compare total and departmental consumption figure with hotel industry benchmark to determine potential saving. Now the next is communicate the management commitment to water reduction and the sequent objective and goals to all employee. In a 5 globes earlier Ecotel's 5 globe, the employee education is very necessary. आप employee अगर educate होगा then they may educate their guest को educate कर सकते हैं for water and energy conservation. Train staff so they understand how to make prudent use of water and how to maintain equipment in optimum energy efficiency. Encourage staff to put forward their own suggestion for water reduction. Establish monitoring and targeting system so that you can regularly report progress back to staff and other stakeholders. Now this is the pie chart. In pie chart the use of water is established कि सबसे ज़्यादा पानी आप कहाँ यूज़ करते हैं. तो मैंने पहले भी बताया था कि सबसे ज़्यादा पानी कहाँ यूज़ होता है. इट्स यूज इन किचन एंड अ कूलिंग टावर. एसी का जो टावर होता है और जो किचन होता है इसमें सबसे ज़्यादा पानी का यूज़ होता है. सबसे ज़्यादा आपने देखा है जो ब्लू कलर का बना है दैट इज़ अ किचन. 34% of total water used in a kitchen, then 32% in cooling towers, the AC towers, then 17% in toilet like urinal and buckets, they are used 17%. SARS, boiler 1.1, laundry 8%, miscellaneous 6%, and pools generally use lots of water, but the pools water are not changed daily. उसमें हम कुछ ऐसा ट्रीटमेंट प्लांट लगा देते हैं कि अगेन आजकल ऐसा होता है कि पूल का जो वाटर होता है दे आर ट्रीटेड एंड अगेन कम बैक टू द पूल. वो पूल में बार बार आ जाता है साफ पानी. The first step in water management and efficient design and maintain plumbing system. Avoid leakages. लीकेजेस नहीं होनी चाहिए और आपको पहले से डिज़ाइन कर लेना चाहिए कि किस तरह का प्लम्बिंग सिस्टम आप करेंगे जिससे कि वाटर कम से कम यूज़ हो. Shower flow should be no more than 10 liters per minute. Low flow shower heads 15% reduction. Conventional taps more than 6 liter minimum or 4 liter hand wash. Now the buckets are coming. They have the buckets which are coming. The name of that bucket is aerated bucket. आपने देखा होगा कि बहुत घरों में एरिएटेड बकेट्स लगे होते हैं. आपको पानी तो बिल्कुल वाइट दिखाई देगा बट द फ्लो इज वेरी हाई, पर उसमें जो वाटर रिडक्शन होता है दैट इज अ 50% वाटर रिडक्शन देन अ ट्रेडिशनल टैप्स. पब्लिक टॉयलेट, स्पा और स्विमिंग पूल. पुश बटन शावर, स्किन टैप, इंफ्रारेड सेंसर. द सेंसर आपने देखा होगा सेंसर वाले आजकल जितने भी पब्लिक एरिया हैं, चाहे आप मॉल जाएं और होटल जाओ, यू जस्ट द टैप्स और फकेट सेंस योर हैंड एंड the water is running. Then when you remove your hand, the water has been stopped. So
This also reduce the water consumption. Low flow toilet use an average of just 6 liter per flush compared to old. आजकल जो टॉयलेट फ्लश आ रहे हैं आपने देखा होगा उसमें 2 बटन्स हो रहे हैं, वन फॉर द यूरिनल यूज एंड वन फॉर द, तो 2 जो बटन होते हैं वो अलग अलग वाटर फ्लो के लिए बनाए जाते हैं. Laundry wash small quantities in 5 kg machine. Always ensure machines are fully loaded. Minimize the rinse cycle as much as possible without reducing quality. Maintenance is also a key of success. देखिए ये बार बार आप लोग से बताया जा रहा है कि when you are in the first semester, when we are discussing our coordination with housekeeping and maintenance, there are 3 types of maintenance. That is a preventive maintenance. First is routine maintenance, scheduled maintenance, and preventive maintenance. 3 types of maintenance is there. So always be in a preventive maintenance. ये भी आपको बताया था कि what is preventive maintenance, कि आपको जैसे for example if you are giving a AMC for your laundry or something, laundry equipment, तो क्या होता है कि वो 1 साल में आपको आके या फिर it's depend upon the time duration of AMC कि वो 6 महीने में या 1 साल में आपके सारे इक्विपमेंट को ठीक करता है. तो इससे क्या होता है कि इससे एनर्जी भी आपकी कंजर्व होती है एंड ऑल्सो द वाटर कंजर्व देयर. प्रिवेंट फॉर लीक्स, आपको मैंने पहले भी बताया था लीक्स नहीं होना चाहिए. कंडक्ट रेगुलर मेंटेनेंस टू प्रिवेंट लीक्स. रीड वाटर मीटर लास्ट थिंग एट नाइट एंड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. Backwash the swimming pool every 2 to 3 days rather than daily. It is also best to operate a backwash system where water can be recaptured and used for irrigation. Swimming pool. Cover a swimming pool for evaporation. The evaporation rate from an outdoor pool varies depending on the pool's temperature, area temperature and humidity, and the wind speed at the pool surface. The higher the pool temperature and wind speed and the lower the humidity, the greater the evaporation. So when the pool is not in use, this sentence is saying that when the pool is not in use, so we cover it with some covering instrument. Garden in grounds. Do not water grounds in heat of the day. In hot climate, the best time is watering is the evening. In earlier we have discussed like we can use recycle water for gardening, like water from the kitchen and water from the toilet area, or that can be treated and can be used in a landscaping and gardening. Also the sprinkles, we can use the sprinkle for gardening. It reduces the use of water. Put a procedure in place of manual watering and train gardening staff to reduce water use where possible. Use rainwater harvesting techniques to divert and capture rainwater from roof and gutter. Water can be diverted into underground storage tank or into a water birds. Plant actually prefer rainwater to treat water from a tap. Generally rainwater nowadays every hotel, whether it is hotels or a normal commercial hotel, कोई भी होटल है उनको ये एक जो आप लोग 5 स्टार कैटेगराइजेशन सर्टिफिकेशन का पढ़ते हैं उसमें ये एक चीज बताई जाती है कि एवरी होटल शुड हैव अ वाटर ट्रीटमेंट प्लान, बिकॉज
अगर आपका होटल इकोटेल है तो it is necessary that all the certification is necessary, but if your hotel is not a ecotel, then the some level of conserving like energy conservation and water conservation plants should be put in your hotel. So water treatment plant are there. The water can be used from kitchen or rainwater harvesting, generally used for a cooling towel or a laundry. जो rain water जो हम पानी को जमा करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसको हम लॉन्ड्री में और कूलिंग टावर में भी यूज कर सकते हैं. If possible, use grey water from the bath and sink for irrigation. You all know, I hope you all know what is grey water. Grey water are those water which are coming from toilet and generally from the toilet or sink of kitchen, and it is treated and then again used in a garden and landscaping. Native species of plants often need less water. Design and landscape your grounds in keeping with existing environment. Water management system, इसमें आपको बताया गया, देखिए कुछ चीज़ें कि you have to wash your vegetable in a big container, not directly from the running water. Some hotels have estimated that only small percentage of water consumed is actually by the guest. The remainder is used by chambermaid during the cleaning. Put procedure in place and conduct training to inform housekeeping on how they can reduce water use. These procedures should include how many times to flush the toilet when cleaning, not to leave tap running or use excessive water. Now the linen reuse program. You have done your most of you have done your training at commercial hotel, where all the linen change every day for a guest. But nowadays in eco hotels, linen reuse program are there. हम लोग गेस्ट को ये समझाते हैं कि because of the eco hotels we are mostly in the water conservation and energy conservation program. So it's request to all guests to reuse their linen, not to wash daily their bed sheet or towels or pillow covers. Instead of daily washing, they can wash after 2 or 3 days. This program is also useful for both the water conservation and the energy conservation. Our role model to educate guests. Hotel can also play a role in educating customer about water issue by communicate to guests the importance of fresh water resource within the area and provide opportunity to allow guests to use water wisely. Encourage guests to shower instead of bath. Suggest they do not leave the tap running when brushing their teeth. It can save up a 9 liters each time they do so. Invite them to reuse their towels and linen by opting not to have them change every day. Incentivize guests to change their behavior through donation or vouchers to spend in होटल. इसका क्या मतलब, अगर ये आप इंसेंटिव दीजिए गेस्ट को कि इफ गेस्ट आपको वाटर कंजर्वेशन या एनर्जी कंजर्वेशन में मदद करता है तो आप उसको कुछ इंसेंटिव दीजिए, लाइक फ्री डिनर और डिस्काउंट्स इन देयर रूम्स. इस तरह से आप उनको इंसेंटिव दे सकते हैं.
Inform guests how the hotel reduces water consumption in other area of the hotel. From all of the above, a key component of a water management action plan is communication with and education of staff, but it should be seen as high purpose together with other energy efficiency measures. So we have discussed some point of water and energy conservation because it is very important for both Ecotels to get certificate for a Ecotels hotel. Ecotels, they need conservation of energy and water, but nowadays every hotel like commercial hotel or resort hotel, every type of hotel, they have to conserve energy and water by the different ways or what we have discussed earlier. So हम लोग ने जितना भी डिस्कशन किया वाटर और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, so आप चाहे इको होटल को तो सर्टिफिकेशन लेने के लिए करना ही है, बट जितने भी होटल्स जो कमर्शियल होटल है या रिजॉर्ट है, हेरिटेज है, they have to reduce their energy and water conservation for the sustainable development of the environment. So this is all by my side. Thank you very much for listening me